श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत कवचम्। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान देवता रां बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकम्। ओम रौं कवचाय हुं ह्रौं अस्त्राय फट। ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। पुनर्हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकम्। श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकल ब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अंगदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 षट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय पं 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 फट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम पूर्वमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते
भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जंग 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठेन् नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तो पठेन् नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेन् नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेन् नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम्। अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी। अथ विनियोगः ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादि ऋषिरनुष्टुप् छन्दो महाकाल शनिर्देवता संबीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी। मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं। तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युंजय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः। अकाल मृत्युहरणम् अपमृत्यो निवारणं शनिमन्त्र प्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्थन्त नमोन्तं मानुनायुतं। श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युंजय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणाम्। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन मन्दं बाहोर्मग्राहं न्यसेत् हृदि न्यसेन महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों नटुच्चरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि शनौ शार्वा पठेन्नरः। कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते।
मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः। भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः। भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः। नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने ब्रवोः। सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेद्रतून्। श्रावणं भावयेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च। महोग्राय नमो भार्दं तथा श्रवणयोर्न्यसेत्। नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे। नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत्। मार्गशीर्ष न्यसेत् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः। ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत्। नमः कालप्रबोधाय माघं वैचोदरे न्यसेत्। मन्दगाय नमो मेढे न्यसेर्द्वारफाल्गुनं तथा। ऊर्वोर्न्यसेत् चैत्रमासं नमः शिवो स्वभाव च। वैशाखं विन्यसेज्जान्वर्नमः संवर्तकाय च। जङ्घयोर्भावज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा। आषाढं पद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा। कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके। न्यसेदाशीर्षपादां ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च। नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः। नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत्। न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च। विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमाय ते। जानुद्वये घनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः। ऊरोद्वये वारुणार्न्यसेत् कालभृते नमः। पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च। पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा। रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च। गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च। नमो भोगस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत्। नेसत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च। रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे। मृगं न्यसेत्तद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च। दक्षोर्ध्वभावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे। पुनर्वसुदूर्ध्व नमो वै चापधारिणे। तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्यवे। सार्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः। मघां विभावयेत् कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे। मुखे न्यसेद्भगर्षश्च नमः क्रूरग्रहाय च। भावयेद्दक्षिणासाय मर्यमाणश्च योगिने। भावयेद्वामनासायां हस्तक्ष्यं धारिणे नमः। व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धश्चित्तुक्तबीजवत्। पितृर्थे पुण्यकर्माणि
कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपदमोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सद्ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता रां बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकम् ओम रौं कवचाय हुं ह्रौं अस्त्राय फट ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वंदे वानरनारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय
सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्याम् अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 व षट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय पं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ॐ पूर्वमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रु संहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृहि परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठेन्नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेन्नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेन्नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम्। अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी। अथ विनियोगः ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादि ऋषिरनुष्टुप् छन्दो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी। मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी
पृच्छति स्म जगद्धितां। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं। तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः। अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदायै तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं। प्रतिनाम चतुर्थन्तं नमोऽन्तं मानुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरीं। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत्। गले तु विन्यसेन मन्दं बाहोर्मग्राहं न्यसेत्। हृदि न्यसेन महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत्। जान्वों नटुच्चरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम्। एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि शनौ शार्वा पठेन्नरः। कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः। भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः। नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रवोः सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेद्रतून्। श्रावणं भावयेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च। महोग्राय नमो भार्दं तथा श्रवणयोर्न्यसेत्। नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे। नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत्। मार्गशीर्ष न्यसेत् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः। ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत्। नमः कालप्रबोधाय माघं वैचोदरे न्यसेत्। मन्दगाय नमो मेढे न्यसेर्द्वारफाल्गुनं तथा। ऊर्वोर्न्यसेत् चैत्रमासं नमः शिवो स्वभाव च। वैशाखं विन्यसेज्जान्वर्नमः संवर्तकाय च। जङ्घयोर्भावज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा। आषाढं पद्योश्चैव शनये च नमस्तथा। कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके। न्यसेदाशीर्षपादां ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च। नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः। नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत्। न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च। विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमाय ते। जानुद्वये घनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः। ऊरोद्वये वारुणार्न्यसेत् कालभृते नमः। पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च। पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा। रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च। गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च। नमो भोगस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत्। नेसत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च। रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे। मृगं न्यसेत्तद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च। दक्षोर्ध्वभावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे। पुनर्वसुदूर्ध्व नमो वै चापधारिणे। तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्यवे। सार्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः।
मघां विभावयेत् कंठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे नशेद्भगर्षश्च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्दक्षिणासाय मर्यमाणश्च योगिने भावयेद्वामनासायां हस्तक्ष्यं धारिणे नमः। व्यासकृतं पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धश्चित्तुक्तबीजवत् पितृर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपदमोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सद्ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान देवता रां बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकम् ॐ रौं कवचाय हुं ह्रौं अस्त्राय फट ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय
सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत्कवच स्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामचन्द्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान् इति शक्तिः हनुमत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। पुनर्हनुमानीति बीजं ॐ वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकं श्रीरामचन्द्रवरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्याम् अंगदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 व षट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय पं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ॐ पूर्वमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृहि परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठेन्नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं
चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेन्नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेन्नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी अथ विनियोगः ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादि ऋषिरनुष्टुप् छन्दो महाकाल शनिर्देवता संबीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममाकालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदायै तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्थन्तं नमोऽन्तं मानुनायुतं श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरीं ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन मन्दं बाहोर्मग्राहं न्यसेत् हृदि न्यसेन महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों नटुच्चरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि शनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने ब्रवोः सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेद्रतून् श्रावणं भावयेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भार्दं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत्
मार्गशीर्षन्यसेद्बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वैचोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेर्द्वारफाल्गुनं तथा ऊर्वोर्न्यसेत् चैत्रमासं नमः शिवो स्वभाव च वैशाखं विन्यसेज्जान्वर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादां ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमाय ते जानुद्वये घनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वारुणार्ण्यस्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् नेसत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्यसेत्तद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्धभावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुदूर्ध्व नमो वै चापधारिणे तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्यवे सार्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः मघां विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगर्षश्च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्दक्षिणासाय मर्यमाणश्च योगिने भावयेद्वामनासायां हस्तक्षं धारिणे नमः व्यासकृतं पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेश पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धश्चित्तुक्तबीजवत् पितृर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपदमोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय
सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छित नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सद्ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति।